देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के दिग्गज नेता और केरल के थिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर किसी ना किसी वजह से मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक पर सुर्खियों में छाए ही रहते हैं। कभी वो अपने बयानों और अंग्रेजी की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, तो कभी महिलाओं से मुलाकात की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगते हैं। और इस बार तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर भरे संसद में कुछ ऐसा करते नजर आए, जिसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। दरअसल 5 मार्च को लोकसभा में यूक्रेन के गंभीर हालात पर चर्चा हो रही थी और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद फारूक अब्दुल्ला इस मुद्दे पर अपनी पार्टी की ओर से बात संसद में रख रहे थे। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस सांसद शशि थरूर और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले किसी मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर फारूक अब्दुल्ला से ज्यादा शशि थरूर के चर्चे होने लगे और देखते ही देखते शशि थरूर सोशल मीडिया पर छा गए। लोग उन पर तरह तरह के मीम बनाकर शेयर करने लगे। पत्रकार सुशांत मेहता ने थरूर की संसद वाली वीडियो शेयर करते हुए तंज मारा, शशि थरूर जी हमारी प्रेरणा है। ट्विटर यूजर अभिषेक अवस्थी ने यह मीम शेयर किया, जिस पर लिखा था, शशि थरूर इंपीरियल ब्लू के रियल ब्रांड एम्बेसडर हैं, मेन विल बी मैन। मधुबनी मीमर नाम के ट्विटर हैंडल से यह मीम पोस्ट किया गया, जिस पर फारूक अब्दुल्ला को किताब, सुप्रिया सुले के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और शशि थरूर को आजकल के स्टूडेंट्स बताया गया। फर्रागो अब्दुल्ला नाम के ट्विटर हैंडल से तंज मारते हुए लिखा गया, फारूक अब्दुल्ला की यह ग्रेट स्पीच थी जिसे हर किसी को सुनना चाहिए। आबिद सिद्दीकी नाम के ट्विटर यूजर ने शशि थरूर और सुप्रिया सुले की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, वो बोलती जाएं मैं सुनता जाऊं। नलिनी मिश्रा नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, बैक बेंचर्स ड्यूरिंग क्लास। रोजी नाम की ट्विटर यूजर ने लिखा, शशि थरूर संसद में गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यश परमार नाम के ट्विटर यूजर लिखते हैं, मुझे शशि थरूर हमेशा से पसंद रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है वर्क लाइफ और रोमांस के बीच कैसे बैलेंस किया जाता है। प्रयाग नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, शशि थरूर विल बी द परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंपीरियल ब्लू। संसद में किसी बैक बेंचर की तरह एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले से बात करते नजर आए कांग्रेस सांसद शशि थरूर को देखकर सोशल मीडिया पर लोग इसी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शशि थरूर और सुप्रिया सुले के इस वायरल वीडियो को अल्लू अर्जुन की हालिया फिल्म पुष्पा के श्रीवल्ली गाने पर एडिट करके भी खूब शेयर किया जा रहा है। 45 सेकंड का यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है। लोग भी मीम्स के जरिए धड़ाधड़ अपनी प्रतिक्रियाएं देने में लगे हुए हैं। इस वीडियो में शशि थरूर बड़े आराम से मेज पर चिपके हुए हैं और सुप्रिया सुले की बातों को सुन रहे हैं। आप भी देखिए वो पूरा वीडियो, जिसकी वजह से शशि थरूर बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। थैंक यू थरूर जी। नेक्स्ट डॉक्टर्स फरूक अब्दुल्ला जी। Thank you, Mr. Chairman. After a great diplomat who has served the United Nations for years, it's a very difficult thing for me to speak. He spoke very well, and his English is beyond me anyway. First of all, I'd like to start with, it's a failure of the United Nations. United Nations continues to fail this world. It failed, as Tharoor said, in Vietnam. It is still failing in Korea. It has failed in the Middle East. And I don't think, I personally, over these years, have any hope from that organization. First of all, I would like to thank not only the Prime Minister of India, but all those ministers who he chose to go to that war-torn country to bring our children back. And I must say, at the cost of their own safety, they took this journey and brought those children back. I congratulate you and I congratulate the Prime Minister for this bold step. But also at the same time, it's very easy to say that we should play a
mediation role in a condition today where two major powers, America and Russia, are at loggerheads. So why did it happen? Russia continued to tell Ukraine, please don't have enemy round my border. I hope my members will remember when, at the time of Khrushchev, they put missiles in Cuba. Kennedy was the president of America. They had to remove because America felt the threat of those missiles. Today, Russia feels the same way. I think they told this country, very frankly, please be neutral. We have no difficulties with you. They also gave them some aid before that, many millions of dollars. Stay free. But they still chose to join NATO. No doubt, it was there. It is a free country. They could choose. But Russia felt threatened. This we should not ignore. And I think, under those circumstances, when you say that any country, how about us? When you think of China and you think of Pakistan, now you're telling that Russia will also join it. Are we not afraid? Are we not worried that our forces will be tremendously at pressure to defend our integrity? That is what that country felt. Now, the way forward. Question is, all of this happened. Millions have moved out of their home. Many have died. And God knows how many are yet going to be taken out of the soil. How do we move forward? Let's forget. It's over. The war is there. It is still there. But how do we now comprehend of saving whatever is left so that the war comes to an end and the world comes to a position of surviving? Today, the world is not surviving. You see our neighbor, Sri Lanka. Look at the position there. I hope we don't have to go through that situation in this country. Therefore, it's essential that the war must end. How do we end it? All right. Now, you said diplomatically. Is there a diplomatic chance? I remember Trump said, America first. Why is India not thinking India first? If it is not in India's interest, this war, then I think to the foreign minister and through him to the prime minister I would request, we must take major steps. Major, not small steps. Major steps in de-escalating that war, finishing that war. Unless we do that, you will not be able to tell future people that India played its part. India is a neutral country. India never took sides. Though Russia gave it, the only country that the Russians gave when our ambassador was D.P. Dhar, and they signed an agreement which they have signed with no one, that war on India will be war on Russia. Never forget that. And therefore, what we must remember, that if we want to save friends, because we've got friends in America, we've got friends with Russia. We're not enemies of any of these countries. And that is one of the biggest things that country has achieved from the Nehru's time. Whatever one may say, it was the Nehru's foreign policy of keeping neutral with friends from all sides so that we could move forward and take this country from poverty to the developed country. Therefore, my request to the foreign minister would be, sir, please move faster so that at least people will say, Gandhi's nation has saved this world. And thank you, sir. God bless you.